Okay, so yesterday we started learning about the new concept that is called as delegation of authority. As far as delegation of authority is concerned, delegation means transfer of authority from superior to subordinate. Many a times it is necessary to transfer the authority because superiors are supposed to do the work which is related to decision making. And as far as follow up of the plan is concerned, that should be done by the subordinates. So when subordinates are working, they need to have some sort of authority as well. अगर आप सिर्फ काम देते जाएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाएंगे तो काम शायद ठीक से नहीं होगा. That will make them frustrated, right? So under the stress atmosphere, they will not be in a position to give you that efficiency what you are looking for. So here there is need for balancing both. You have to balance between authority as well as responsibility. Whatever responsibility you have given, the same amount of authority should be given. And for that, delegation should happen. Delegation means official assignment of the authority from superior to subordinate. So superior अपनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को दे देता है ताकि काम ठीक से हो जाए. पर कई बार ऐसा देखा गया है कि वो काम नहीं हो पाता है, मतलब जो डेलीगेशन है वो नहीं हो पाती है, डेलीगेशन नहीं हो पाता, ट्रांसफर नहीं हो पाता है. देयर आर टू फैक्टर्स, मेजरली टू फैक्टर्स. One is on the part of superior and one is on the part of subordinate. So sometimes there are chances where the superior is in a position or superior is willing to delegate the authority, but subordinates are not ready to. And sometimes subordinates are ready to accept the challenge, but superior is not giving them the authority. So these are the some examples or some factors which we have discussed yesterday. The superior is not delegating the authority because he's having fear of being exposed or losing of control, or he may be having fear that the subordinate may be better than the superior, or he may be not be having the confidence in the subordinate that they will be in a position to complete the work in time. Now similarly, subordinates are also having their own fears, like fears of criticism, fear of being exposed, fear of being losing the job. So all these are the things which are prohibiting them to go for delegation of authority, right? Now here we have to find out some solution for this, because everybody knows, every management knows that there is need for delegation of authority. Delegation of authority should happen. Then only your organization will give you the output. जब तक ये नहीं होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हो पाएगी, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा, आपका बिजनेस एक्सपांड नहीं होगा. तो ये होना बहुत जरूरी है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फाइंड आउट व्हाट आर द मेजर रीजंस for, because of that they are not in a position to delegate the authority. Organization to organization the reasons may be different. I think I did not tell you about one theory. There was one management scientist called as McGregor. McGregor, MC Gregor, Gregor. McGregor have found in his study that there are two types of people who are working in an organization. One are belonging to category X and one are belonging to category Y. Because he has conducted so many interviews, he has done the very careful and very close observation of the behavior of the people, and then he concluded that in any organization or in every organization you will find two types of people. One are belonging to category X and one are belonging to category Y. Now how he has explained, he said that if the person is belonging to category X, he will not be innovative, he will not be creative, he will always be ready to do the routine work, he is not ready to take the challenging task, right? So this is how no he explained the category X. Then he said there are some people who are belonging to category Y. They come out with the innovative ideas, they don't have any fear, they are very creative, they want to become the leader, they don't want to become the follower, they are very much influencer. But X people are not like that. Now you yourself can evaluate yourself that in which category you belong to.
आप कैटेगरी एक्स में आते हो या कैटेगरी वाई में आते हो। कैटेगरी एक्स वाले हमेशा फॉलो करना जानते हैं, नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो हमेशा अपने शेल में रहते, कंफर्ट जोन में, नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से बात नहीं होगी। और कुछ थोड़ा छोटा सा मोटा काम रहेगा तो किसी को साथ में लेके जाते हैं। तो ये कैटेगरी एक्स हो गया। और कैटेगरी वाई जो रहते हैं ना, वो काफी बोल्ड रहते हैं, मतलब ब्लंट भी रहते हैं, उनको जो मन में रहता है वो बता देते हैं, डर नहीं रखते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज करना चाहते हैं, एक जगह पे शांत होके नहीं बैठेंगे, हाँ चलो जॉब मिल गया 15,000 का, अभी शांति नहीं। उनको 15,000 से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा इनिशियली। वो बोलेंगे कम से कम मेरी सैलरी 1.5 लाख तो होना चाहिए, 1,50,000 पर मंथ अर्न करूंगा तब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। दैट इज कॉल्ड एज कैटेगरी वाई। यू इवेल्युएट योरसेल्फ, आप कौन सी कैटेगरी में हो। I am 100% sure you may feel that I belong to more in category X and less in category Y. Right? So organizations are facing this problem, and because of that, delegation is not happening. So authors have given, the experts have given some principles of delegation. That means when you want to delegate your authority to your subordinates, these rules should be followed. These provisions should be followed, and these are called as principles of delegation. What are these principles? These are the principles. The first principle is principle of functional clarity. As far as term functional is concerned, functional means what kind of work you want to allot to your subordinate. You have to clarify that what kind of the output you are wanting, what will be the procedure, how the function should be done, that should be there. And if there is functional clarity, then subordinate will be ready to take your challenge, and you will be able to take your responsibilities as well as authority. अगर मैं आपको ये कहूं कि अभी सितंबर से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट, I'm not 100% sure what is going to happen. Let us say सितंबर से कॉलेज स्टार्ट हो गया, आप सब लोग फिजिकली कॉलेज में आते हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, और अचानक से मैंने आपको ये कहा कि मैं नेक्स्ट वीक में एक एक्सपर्ट को बुलाने वाला हूं जो कॉमर्स 3 का एक्सपर्ट है, और वो आपको और ज्यादा गाइड करेगा, एक ही लेक्चर लेगा, तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप उनको पूछ सकते हैं क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। लेकिन मैंने आपको ये भी कह दिया कि ऑन दैट डे आई विल नॉट बी अवेलेबल because I am having some very important meeting. I'll be going and attending that meeting. I told you that. And now what I am doing, I am informing some of you, 2, 3 people that, I will not be available in the classroom. One of my friend will come and he will, take the lecture. You have to manage the show. That means they have to take care of discipline. They have to take care of the welcoming of the guest. They have to see that the person who is going to deliver the lecture is not facing any kind of issue. उसको गेट से रिसीव करना, और उसके बाद स्टाफ रूम में लेके जाना, फिर स्टाफ रूम से क्लासरूम में लेके आना, फिर वहां पे भी उनको सारी चीजें अरेंज करके देना, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कितना बड़ा काम हो जाएगा। और मैंने आपको सिंपली क्या कह दिया कि मैं तो उस दिन नहीं रहूंगा, आप मैनेज कर लेना। आपको बात समझ ही नहीं आएगी कि करना क्या है। कम से कम सर को बताना तो चाहिए था कि करना क्या है, तो हम कर लेते। यही बोलेंगे। यही चीज कंपनी में भी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है। सबऑर्डिनेट्स में भी रेडी, बट दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट वेरी मच क्लियर दैट व्हाट फंक्शन वी हैव टू डू। So over here, when delegation of authority is happening, there should be functional clarity. The superior should explain very clearly, step by step, that what work is expected from subordinate by giving that much authority and responsibility. So by getting that knowledge or getting that information, subordinate easily can do that. और एक confidence भी आएगा उसके मन में कि हाँ मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, ऑलरेडी मेरा बॉस मुझे समझा के गया है कि मुझे ये सारे काम करने हैं। राइट, तो ये हो जाता है फंक्शनल क्लैरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनल क्लैरिटी। Then the another one is principle of authority and responsibility. Now this particular principle says that always and always, whatever authority you are delegating, you see that the same amount of responsibility has been handed over. आप सिर्फ अथॉरिटी देके छोड़ नहीं देना कि हाँ भाई तू ये डिसीजन ले लेना, अभी स्टॉक खत्म हो गया तो तू डिसीजन ले ले किससे मंगवाना है, और ऑर्डर पास करा दे, साइन करके पेमेंट कर दे। अथॉरिटी तो दे दिया और जिम्मेदारी तो दी नहीं।
आपको जिम्मेदारी क्या देना है कि देख मैं अथॉरिटी तो दे रहा हूँ, दैट यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, राइट? यू कैन इवन मेक द वर्क ऑर्डर, और you can even apply for the payment also. But at the same time, if the material is not of that much expected quality, then we will deduct your salary. उसको थोड़ा ये भी देके रखना है। अथॉरिटी तो दे दिया आपने, उसको बोला कि लाखों रुपए का, करोड़ों का मटेरियल खरीद दो जहां से भी चाहिए, और पेमेंट का भी अथॉरिटी आपको दे रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिया, तो वो तो किसी से भी मटेरियल खरीद लेगा ना, अपने जान पहचान वाले से खरीद लेगा, कहीं से भी लेकर आ जाएगा। तो आपने अभी जिम्मेदारी क्या दी कि मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सैलरी से हम लोग पैसे कट कर लेंगे, नुकसान जितना होगा तुम्हें भरना पड़ेगा। इफ यू आर टेलिंग दैट, यू आर गिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिम, then he will be very careful when he is going to use the authority ना, he will be very careful, he will see that अरे अगर गलत डिसीजन हो गया तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, शायद मेरी सैलरी पूरी कट हो जाएगी, तो मुझे वो नहीं करना है। फिर वो काम जो दिया है अच्छे से करेगा। That is the principle of authority and responsibility. Don't delay or don't ignore the responsibility. See that the same amount of responsibility has been given. Balance करना है, कोई एक चीज ज्यादा कर दी तो प्रॉब्लम हो जाए। Then principle of exception. As far as this term exception is concerned, here it is said that until and unless there is no need for superior to interfere, superior should not interfere. जब तक जरूरत नहीं है सुपीरियर को इंटरफेयर नहीं करना। जब लगे कि हाँ अरे बहुत कंडीशंस अभी ये हो गए, अभी मेरा इंटरफेरेंस जरूरी है, तो वो आना चाहिए। That means once the work is allotted, once the authority and responsibility is given to the subordinate, then superior should wait and watch. He should not interfere every now and then कि अरे ये तो तुम गलत कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है, उसको बुलाओ। तो उसको क्यों क्यों दिया अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम तो आप ही इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी देयर। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Have you understood this principle of exception? Principle of exception means until and unless there is no need for the interference of the superior should not interfere. आपके घर में भी देखो, अगर आपकी मम्मी या पापा आपको कुछ काम देते हैं, आप वो कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, पर बीच बीच में वो आके टोकेंगे तो आपको कितना बुरा लगता है, आप छोड़ दे, मम्मी खुद ही कर ले, मुझे नहीं करना। तो ये जो चीज है ना, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो आप ऑफिस में भी जब आप काम करोगे तो ये चीज आपके मन में ही है ना, आपका साइकोलॉजिकल है ना, ये आपके नेचर में आ जाता है। तो जब बॉस आपको काम दे रहा है और फिर बार बार आपको इंटरफेयर करेगा, आपको बुरा लगेगा, राइट? तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो नेक्स्ट टाइम से आप उनका काम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। Then principle of unity of command, this already we have learned. We were discussing regarding the 14 principles of management given by Henry Fayol. What is unity of command? Unity of command means the order of work should come from one person only. If you are getting orders from so many people, then that will create chaos and confusion, and finally work will not get done. So over here, when the authority is delegated from superior to subordinate, you have to see that there is unity of command. Only one person is delegating the authority, not 2-3 people are delegating the authority. If 2-3 people are giving you their authority to you, then you will get confused. So the work will not get done. So there should be always unity of command. Work should come from one person only to one subordinate. Then principle of scalar chain. Scalar chain over here means you have to follow, the system of, management of organization, where you are having some scales, you are having some line. There is no direct connection of the lower level management to the top level management. It should not be like that. There should be proper system of communication. Lower level management, if they are having any problem or any issue, they should inform to middle level managers first. The information should go to middle level managers, and they will be solving at their own level. If the problem is not getting solved, then only middle level manager will pass message to top level managers. That is the system. And every organization must have this scalar chain. Of course, it is having its own drawbacks as well. But when you are having delegation of authority, that system in your organization, you have to see that you are having principle of scalar chain. If you don't have principle of scalar chain,
then your system will be collapsed. You will not be able to get the work done because anybody will be talking to anyone. You are a middle level manager, and if the lower level manager directly they are talking to top level manager, they are getting their guidance, their permissions, and they are doing the work. Then the next day when you are going and you are asking that what are you doing, the lower level manager will say that अरे सर हम लोगों ने ना मैनेजिंग डायरेक्टर को पूछ लिया, अभी कोई बात नहीं। तो आपको कितना बुरा लगेगा, कह रहे फिर मेरा वैल्यू क्या है? No, I am supposed to know no what is happening under me, right? So there should be principle of scalar chain. The information should go through proper channel, then only the work will get done. That is principle of scalar chain. Then principle of absoluteness of responsibility. As far as this particular meaning is concerned, here when the superior is delegating the authority to the subordinate, it should not be considered that he is relieved from the work, right? एक सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, ठीक है, उसने सारे रूल्स फॉलो किए, जो भी थे सारे रूल फॉलो किए और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, और समझो उस पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट से कुछ मिस्टेक हो गई उसने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया. Now this particular point says that of course the person who has done the mistake will be held responsible. There is no question at all. But even the superior who has given the authority to that wrong person should also be held responsible. नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जो सुपीरियर है वो तो अपने आराम से निकल जाएगा. सुपीरियर बोलेगा अरे मैंने तो उसको बोला था काम करने के लिए, उसने सब गलत गड़बड़ कर दिया, आई एम नॉट aware of that, I will not be taking the responsibility of that. He cannot say like that because he was given one authority and upon his responsibility he has delegated the authority to another person. अपनी जिम्मेदारी पे उसने अपना अधिकार किसी और को दे दिया, तो उसकी जिम्मेदारी तो उसको ही उठानी पड़ेगी ना. अगर उसने किसी गलत पर्सन को अपनी अथॉरिटी दे दी जिसकी वजह से नुकसान हो गया, तो ये पर्सन भी जिम्मेदार माना जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द सुपीरियर कैन नॉट बी रिलीव्ड from the responsibility. They cannot run away from that. They will be responsible. Then selection of right subordinate. This already I told you that when you are delegating your authority, always and always be very careful in selecting the right person, because you may come across many people who will misuse your authority. Who 100% they will misuse your authority. So you be very careful. You give the authority to the person to whom you feel, okay, this is a right person. He will not misuse the authority. At the same time, he will fulfill the responsibility also. That is a very tough job actually for the superior. So with the passage of time, when superior subordinates start knowing each other, they start knowing each other's qualities, skills, then based on that, some authorities are getting transferred. Not entire authority. Depending upon the situation, some authorities are getting delegated from superior to subordinate. So there should be always and always selection of right subordinate. The person who is not going to misuse your authority will be the right subordinate. And then the last principle is provision of incentives. Provision of incentives means always and always keep, one kind of system in your organization to reward the person who are doing the good work. जो अच्छा काम करते हैं आप उनको रिवॉर्ड देने का हमेशा एक कायदा बना के रखना है. प्रोविजन मतलब एक तरह का रूल. यू सी, अगर आप सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी. वो बेचारा अपने क्लरिकल की सैलरी में आपको ऑफिसर का काम करके दे रहा है. तो जब वो थोड़ा और आगे आके ज्यादा काम कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उसे मोटिवेट करना. यू हैव टू गिव सम इंसेंटिव्स, नॉट ओनली मॉनिटरी. मॉनिटरी दिया तो बहुत अच्छा, इवन देयर आर नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स आल्सो. आप उसको एक लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे सकते हैं, या एक ट्रॉफी दे सकते हैं, या एक टाइटल दे सकते हैं, या एटलीस्ट उसको कुछ और फैसिलिटी दे दो, ट्रैवलिंग का उसको एटलीस्ट ये दे दो.
मतलब वो बेचारा ट्रेन में या बस में आता है तो आप उसे सैंक्शन करके दे दो कि हमारी कार, कंपनी की कार आपको लेने भी आएगी और आपको ड्रॉप भी करेगी, राइट? तो ये हो जाते हैं इंसेंटिव्स। Okay, so I hope this particular part is clear to you. Is it clear? Okay, so this particular topic comes to an end. So I just stop sharing the screen now, and we will be having a look on how to fill the university form right away.